Nykaa's sales and profit growth in the last 5 years do not justify the kind of valuation this beauty and fashion new age company is getting in the market. Nykaa has a price to earning multiple of over 870, meaning for every 1 rupee of annual profit, investors are paying rupees 870. A normal price to earning is around 15 to 25, and there are some companies who gets a very high PE. DMart gets a PE of around 115. Dixon Technology, they get a PE of around 125. Adani Total has a PE of around 600. Nykaa gets a PE of over 870. Nykaa's PE signals only two things. One, a very high expected growth, and second, it must be overvalued in the market. In this video, we will explain the growth puzzle of Nykaa in 5 simple charts. Profit beauty segment से पर क्या Nykaa फैशन वर्टिकल और सुपर स्टोर सेगमेंट पे ज्यादा दाव खेल रहा है? थर्ड पार्टी सेलर्स देते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, Nykaa के ओन ब्रांड्स लाते हैं मार्जिन्स। Nykaa को दोनों चाहिए जीतने के लिए। Nykaa का ग्रोथ मार्केटिंग से खरीदा हुआ है, प्रॉफिट अभी दूसरी प्रायोरिटी है कंपनी। Nykaa का नया बिजनेस ग्रोथ दिखता है पर प्रॉफिट को दबा देता है। ग्रोथ की गाड़ी तेज पर प्रॉफिट का इंजन वीक। नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ Nykaa's businesses. Let's look at the biggest segment, which is the beauty. Today 91% of the consolidated revenue comes from the beauty segment. So this is the biggest segment of Nykaa. Now this segment is consistently profitable. Now let's go to number 2. Fashion contributes only 8%, to consolidated revenue, and here, there are lower take rate and lower margins. And I explain you what exactly I mean by that. Now take rate is the percentage of gross merchandise value, जिसको हम वो GMV बोलते हैं, that a platform like Nykaa actually earns as revenue after paying sellers and the brands. It reflects the commission plus margin plus fees that the marketplace keeps. And fashion is a big segment Nykaa is betting on. When we say Nykaa's fashion portfolio, it involves apparel, western, Indian activewear, lingeries and all, footwears and bags, jewelry and accessories, home and lifestyle products. So they have own brands as well as third party sellers on their platform. Now let's look at the third segment, which is the others, and if you see GMV scaling fast. So this is another segment where Nykaa is betting big. So if you look at more than 91% on the beauty side, but fashion and the other, these are the two segment they are building. Now number 1 in others is the superstore. This is the eB2B segment. So Nykaa's wholesale distribution platform for beauty products targeting kirana store and small retailers in tier 2 and tier 3 cities. And this was launched in FY22 and scaled to around 950 crore of GMV. Second is the international. Now in Nykaa's experiment in selling global brands to Indian consumers and exporting Indian brands abroad. So example is tie-ups with Estee Lauder, Charlotte Tilbury for India, and cross-border sale of Nykaa cosmetics. Now this segment has been built since IPO, again in FY 21-22, and this has a very small share currently. Now another one is the Nykaa Man, a men's grooming and lifestyle vertical for skincare, beard care, fragrances and accessories. Example is Bardo oils, the Man Company kits, Adidas deodorants, and this was started way back in 2017. Now integrated with Nykaa Beauty, so niche, but again growing. And the final is the Nysaa GCC. This is a global venture, and Nykaa's Middle East foray has been done through this, especially in Dubai and GCC region. They are selling Indian beauty labels like K Beauty, Dot and Key abroad, and this was launched very recently in FY25. Currently in early investment phase, without upfront cost. And now the question comes when Nykaa has a very profitable, beauty business, which contributes more than 90%, to the revenues. Why are they expanding on the fashion and the other, brand? Because a lot of capital is moving, to these two segments, which in a way is impacting, its profitability. So let's understand the logic behind expanding into fashion
and the other segment. So beauty is a profitable and fast growing, but if you look at its market size in India, it's very small. The entire beauty market is 20 billion US dollar, and if you compare it with fashion is 100 billion US dollar plus. So if Nykaa stayed only in beauty, its long-term revenue potential would be limited. But the challenge is, can they crack it? Now fashion, as I said, is a much larger market and it has a much bigger wallet share. So fashion is like 4 to 5x bigger than beauty in India. So Nykaa already has a very strong female customer base. So cross-selling fashion is very natural way to increase wallet share. Management says fashion is still in peak investment phase, but once repeat ratio rise, it can break even, and the target they have set is FY26. So will they be able to execute it? I mean, that's what we have to see. Nykaa दाव लगा रहा है फैशन और अदर सेगमेंट में. Beauty is well settled and making consistently profits. लेकिन ये दो सेगमेंट में नजर रखना बहुत जरूरी है, because capital allocation is happening there, expansion is happening there. So we have to track the margin, the capital, and everything related to these two segments, to understand the business model better. Now, पहले presentation में हमने देखा the product segments, beauty, fashion, and the others. Now let's look at Nykaa's own brand versus the third-party seller. This is a very important chart, to understand Nykaa's business. Now let's look at the examples first. Own brand, is on cosmetic side, K-Beauty, .nk, and others. And third party is the L'Oreal, Estee Lauder, Maybelline, MAC. Now own brand का business model ये है कि Nykaa designs, manufacturers often via contract and sells under its own label. And if you look at the third party, which is a marketplace model, Nykaa hosts brand on its platform and earns margin, take rate, which I explained you earlier, 15 to 20% for beauty, and this is much lower for fashion. Now अगर हम दोनों का शेयर देखें ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में क्या है, जो ओन ब्रांड्स हैं 13 to 14% कंट्रीब्यूशन है ओन ब्रांड का. सो 2100 का जो रेवेन्यू आ रहा है वो ओन ब्रांड से आ रहा है. नाउ 86 to 87% इज कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी सेलर्स. सो अगर हम नायका का पूरा बिजनेस मॉडल देखें तो ये पूरा थर्ड पार्टी में डिपेंडेंट है. ओन ब्रांड्स तो बिल्कुल 13 से 15% ही है. अब नाउ समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी. हायर मार्जिन है 2 to 3x वर्सेस थर्ड पार्टी, बट शेयर बहुत लो है, तो ये बढ़ाना चाहिए. आई एम श्योर दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट, बट इट्स नॉट इजी. हियर मार्जिन्स लो है, 15 to 20% टेक रेट है इस ब्यूटी के, बट contribution is very high. Third is the impact. This is the fastest growing, 55% year on year growth. It drives traffic, variety, and customer trust. And finally, अगर हम strategy देखें going forward, they want to expand to 25-30% GMV, and there is a omni-channel push. So from 13 to 14% to 25% to 30%. Now they have not given any target year, बट अगर जब तक ये 25-30 नहीं जाएगा तो वो ग्रोथ और इन प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा ही. सेकेंड, अगर हम थर्ड पार्टी देखें, इट विल रिमेन 70 to 75% ऑफ जीएमवी. सो दिस इज द थिंग अबाउट own brands and the third party seller. If you are enjoying my analysis and the presentation style to dissect business model, subscribing to Stock Stories and Skill will put you ahead in understanding risk and challenges in the stock market. And if you need the PDF of entire presentation, just send me your email ID in the comment section and I'll immediately respond. Now this is another important chart on Nykaa's marketing cost intensity, and I have got figure for the last 5 years, and let's understand the marketing cost or the expenses on the beauty side, fashion, and also the consolidated for the company. So first is the beauty marketing as a percentage of NSV, fashion marketing as a percentage of NSV, and consolidated as a percentage of NSV. Now NSV is the net sales value. So let's understand the net sales value. As you know, the gross merchandise value is the total value of goods sold on Nykaa before discount and return. Net sale value NSV is the GMV minus discounts, returns, and cancellation and taxes. So that shows the actual net sales value which the company has realized. So if you look at the beauty, FY21 it was 8 to 9%,
moved to 9.5, then 7.9, then 9 and 9.3. So the marketing expenses as a percentage of NSV are almost stable or in fact going up in FY 25. Now let's move to the fashion segment. The fashion marketing expenses as a percentage of NSV, very high, 25 to 30%, because this is the new segment they are building. Then 27, not applicable but very high, improving 25%. So if you see the fashion side also, the company is heavily spending money. And if you look at the consolidated for the company, 9.6, 10, 10.8, 11.3, 11 to 12%, it has gone up for the company. So company is heavily spending. And that's the reason we are not seeing the profitability. So marketing expenses क्या दिखाता है? Number one, growth खरीदा जा रहा है. नायका अपना ग्रोथ हैवी मार्केटिंग स्पेंड से चला रहा है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को कंप्लीटली इग्नोर करके. सेकंड, फैशन इज द प्रॉब्लम चाइल्ड. ब्यूटी सेगमेंट सस्टेनेबल है, 8 to 9% मार्केटिंग है, काफी कम है, पर फैशन में 20 to 25% का स्पेंड चाहिए सर्वाइव करने के लिए मार्केट में. थर्ड, प्रॉफिट की सीलिंग. जब तक फैशन का बर्न हाई है, नायका के मार्जिन सिंगल डिजिट में ही अटके रहेंगे. एंड द फाइनल, द स्टार्टअप वाली स्ट्रैटेजी. 10 साल पुरानी कंपनी है नायका और अभी भी तक स्टार्टअप जैसा मार्केटिंग बर्न कर रही है. Now let's look at some of the segment where the capital allocation is happening and company is heavily spending. Fashion, अगर हम 21 में देखें तो 1780 का GMV था, अभी 3804 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट डबल्ड. नाउ दिस इज स्टिल लॉस मेकिंग the entire the fashion part. If you look at the superstore B2B जो किराना वालों के लिए है और स्मॉल स्टोर वालों के लिए है, so 150 करोड़ का GMV था 21 में, अभी देखे तो 950 करोड़ का है. दिस हैज ग्रोन एंड इम्प्रूवमेंट है नियर ब्रेक इवन पाथ. सो दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग वेयर द कैपिटल इज फ्लोइंग, बट स्टिल फैशन इज मच बिगर देन. अगर हम हाउस ऑफ ब्रांड्स में आए तो 350 करोड़ का GMV था, अभी 2100 का है, तो ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है. एंड दे हैव लॉन्च नाइसा इन दुबई एंड ऑल. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ these three segments. Now let's look at what exactly these number indicate. So growth versus profit trade off. फैशन और B2B का स्केल तेज है लेकिन प्रॉफिट पीछे रह रहा है, जिससे पूरे ग्रुप के मार्जिन दबे हुए हैं. सेकंड, फैशन इज द स्लो लर्नर. 5 साल बाद भी फैशन को ग्रो करने के लिए 20% प्लस मार्केटिंग का खर्चा चाहिए. ना B2B अगर हम देखें किराना वाला, तो इट हैज ए प्रॉमिस, तेज ग्रोथ है और मार्जिन में भी सुधार दिखता है. ये फैशन से जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकता है B2B. सो एक प्रॉमिस है, एक रे ऑफ होप दिख रही है B2B में, जहां से कल कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है. हाउस ऑफ ब्रांड्स एक ब्राइट स्पॉट है, सबसे तेज बढ़ रहा है और लॉन्ग टर्म में मुनाफे का बड़ा ड्राइवर बन सकता है. कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी कैप्ड है, जब तक फैशन ब्रेक इवन नहीं करेगा, जो इतना बड़ा सेगमेंट है और उन्होंने टारगेट रखा है FY26 का. सो वी शुड वॉच व्हाट हैपेंस FY26. नायका का कुल पैट दबा ही रहेगा, भले ही रेवेन्यू तेजी से बढ़ते रहे. नाउ लेट्स लुक एट दिस फोर्थ चार्ट ऑन द वेयरहाउस एंड द फिजिकल स्टोर्स एंड fulfillment cost as a percentage of revenue and all. So again I have a 5-year chart here. अगर warehouse का count देखें तो 17 से 40, so lot of growth has happened there. अगर physical store का count देखें तो 39 से 237 stores हो गए हैं. So let's look at behind this number. So front loaded investment number 1. So नायका ने डिमांड से पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर दिया है. सो वेयर हाउसेज और ऑफलाइन स्टोर तेजी से बढ़ाए जो सेल्स ग्रोथ से तेज थे. सेकेंड, एफिशिएंसी गेन्स बट नॉट स्टेबल. सो FY24 में फुलफिलमेंट कॉस्ट 9.9% तक गिरी, लेकिन FY25 में वापस 9.5% हो गई. तो ये दिखाता है कि कॉस्ट, स्केल और प्रोडक्ट मिक्स पे डिपेंडेंट है. ऑफलाइन रिटेल शॉर्ट टर्म ड्रैग है, 237 स्टोर ब्रांड्स विजिबिलिटी है और सेल्स बढ़ाते हैं, और साथ ही फिक्स कॉस्ट, लीज, स्टाफ, डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाते हैं. जब तक इंफ्रा फुली स्टेबलाइज और स्केल नहीं होता, फुलफिलमेंट एंड स्टोर कॉस्ट मार्जिन को दबा कर रखेगा, चाहे टॉप लाइन बढ़ती रहे. एज यू कैन सी, नायका इज बेटिंग बिग ऑन नॉन ब्यूटी सेगमेंट्स
where the entire capital allocation and the expansion is happening. And we have to see how they execute this strategy. A PE of 870 is very high, and if the growth remains in 20 to 30% range, it is very difficult to justify such a high price to multiple for this stock. In case you have an investment in Nykaa or thinking of investing in Nykaa stock, I suggest do consult a financial advisor, because this video is only for educational purposes.